Balancing multiple work and family roles. We see that ever since women have started working on a formal basis at formal workplaces, their responsibilities have increased. They are carrying dual burden or multiple burden at times, and that's something which is affecting their life and their well being. Women's career patterns are different from the patterns of men's work and career. The way women pursue their career while keeping a balance between home and the workplace is different from the way men do. यानी औरतें तहकीक से ये साबित होता है कि जिस तरह से अपने करियर को बनाती हैं और कोशिश करती हैं कि वो बेहतर से बेहतर हासिल कर सकें, उनके तरीक़ाकार में और उनकी अप्रोच में फ़र्क है निस्बतन मर्दों के तरीक़ाकार और अप्रोच में. So what women are doing, they are also trying to pursue a career. They are also trying to improve their qualifications. Men are also doing the same, but the way they do is different. The case of unmarried working women may be different from the case of married working women. So if a woman is unmarried and she is working, she may be pursuing the career in the same way as a man would be doing. But in case of a married woman, especially with children, the preferences may be different and changed. There may not be huge gender differences though. The unmarried woman, if we compare her with an average man, they may be improving qualification, devoting time and energy to their work and to their profession, just as everyone else is doing. The married woman, on the other hand, has different preferences. She has multiple responsibilities. She has to do her household work, look after the children, the extended family, the chores at home, work at the workplace, and taking care of everyone, including the elderly and the children in the family. So हम देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों की वजह से औरतों की ज़िंदगी में तनाव या दबाव या स्ट्रेस आ सकता है. The burden may be much more in case of single mothers. So if we are talking about a married woman who has a spouse, who has children and other family members, her stress may be shared. She may have a support system available. But if we are talking about a woman who is a single parent, her multiple responsibilities may be causing even more stress to her, because there is little social support from within the family available. So new lifestyles can be observed. We see nuclear families are becoming common as a result of women working and men working. They are moving towards their nuclear families, their homes, smaller homes, where they are sharing the responsibility of the household. So dual earners families is on the increase. The age of marriage is extending as a consequence, and the number of children decreasing in such families. So हम ये देखते हैं कि जब हम मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उससे हमारी ज़िंदगी पर, इंसानों की ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ तरह के असरात हुए हैं. ज़्यादातर असरात शायद मस्बत हैं, और कहीं पे हम ये भी देखते हैं कि थोड़े से मनफी असरात भी हो रहे हैं. सो एक बहुत अच्छी बात है कि जब आपके पास डुअल अर्निंग मेंबर्स हैं तो घर में एक से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं. इसका मतलब है कि ख़ानदान की आमदनी और ज़राए पहले से ज़्यादा और बेहतर हैं. इसका मतलब यह है कि बच्चों की देखभाल के ऊपर वो पहले से ज़्यादा रकम खर्च कर सकते हैं, बेहतर तालीम दे सकते हैं, बेहतर खुराक दे सकते हैं, और शायद इस तरह की फ़ैमिली में लोग एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक भी हैं. दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से, जिसमें सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे हैं, तो सोशल सपोर्ट बाज़ औक़ात कम हो जाती है. ख़ास तौर पे जब बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं अभी वो, या शायद उन्होंने अभी स्कूल नहीं जाना शुरू किया, उस वक्त ज़रूरत महसूस होती है कि अगर ख़ानदान में कोई बुज़ुर्ग होते या एक्सटेंडेड फैमिली में और रिश्तेदार होते तो शायद वो बच्चों की देखभाल कर सकते. इन तमाम चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि एक तब्दीली आई कि लड़कियां और लड़के अब जिस उम्र में शादी खुद करना चाहते हैं वो शायद पहले से ज़्यादा हो गई है. तो अब शायद हम देखते हैं कि 20 या 25 बरस की बजाय बहुत से लोग 30 बरस के करीब शादी करने की तरफ जा रहे हैं. दूसरी तरफ ये भी देखते हैं ग्लोबली, हम ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं करें,
दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि बच्चों की तादाद में भी कमी आ रही है ऑन एवरेज, क्योंकि छोटा ख़ानदान है, न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों की देखभाल का मसला उनको पेश आता है और वो कोशिश करते हैं कि छोटा ख़ानदान हो, छोटा कुंबा हो और वहाँ पर उनके पास खुशहाली ज़्यादा हो और ज़िंदगी जो है सहल और आसान हो. Also, because of improved medical facilities, expectancy of life has also improved. Therefore, the likelihood of having older parents at home has also increased, or other relatives who need care, they are also found. So, we see that since medical facilities are better, fewer people die because of infectious diseases, and we see that people are living longer. जब लोगों की उम्र में इजाफ़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माशरे में बुज़ुर्गों की तादाद में भी इजाफ़ा हो जाएगा और हर ख़ानदान में ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद होंगे जिनकी उम्र तवील होगी. जब ऐसे अफराद ख़ानदान में मौजूद होंगे जिनकी उम्र तवील है, तो इस बात का भी इम्कान है कि ज़्यादा बुढ़ापे की सूरत में उनकी सेहत जो है वो उतनी अच्छी ना रहे और उनको इस बात की ज़रूरत हो कि लोग उनकी देखभाल कर सकें. जो सबसे बड़ा एडवांटेज है घर में बुज़ुर्गों के होने से, वो तो यह है कि बच्चों की देखभाल में बहुत आसानी हो जाती है. बच्चों को वो केयर और शफ़क़त और वो प्यार मिल सकता है जो कि बुज़ुर्गों, दादा दादी या नाना नानी की ना होने की सूरत में उनको शायद ना मिल सकता. We see that the healthier older adults are likely to be active and working, and they are a source of love and affection for the children. But when they grow even older and then they are not physically as fit as they used to be, then they need attention and care. We see that because of these changing patterns, not only that women's lives have changed, but men's lifestyles have also changed. Research shows that as compared to men in previous generations, today's men who marry later bring a range of domestic skills into marriage. तो बहुत से मर्द भी जो देर से शादी करते हैं, अब पहले की तरह से 18-20 बरस की उम्र में शादी नहीं करते, जब वो शादी करते हैं तो उनके पास बहुत से ऐसे स्किल्स आ चुके होते हैं जो कि उनके घरदारी में इस्तेमाल आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सा अरसा अपने तौर पर ही गुजारा होता है. So we see that multiple responsibilities which are for the women, they need extra time, extra effort, extra attention. Multiple responsibilities cause greater stress to women. Maintaining a balance between responsibilities is important for a happy and satisfying life. So we see that when women are carrying dual or multiple responsibilities, stress is added to their life, although this may have positive aspects also. But what is required is support from the family, support from the spouse, and support from the society so that we can facilitate working women in all aspects of their life.